बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। टुडे इज़ माय सेकंड लेक्चर पार्ट ए लेसन नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई होप you have done your previous task. Students, open book page number 25. Take your pencil in your hand. Make a sketch and underline important lines. Now I am reading first paragraph. Flowering plants are not the only living things that use photosynthesis to make food. Some algae, which are simple water plants that include the seaweeds as well as a few types of bacteria, do so too. Like other living things, plants are made up of cells. The cells in a plant's leaves contain tiny disc-shaped organelles called chloroplasts. These contain the bright green chemical chlorophyll, which gives plants their green color. Each cell contains around 50 chloroplasts and an area of leaf surface the size of your little fingernail contains more than 10 million of them. Chloroplasts are the food factories where photosynthesis occurs. स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स में सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि कुछ एल्गी और बैक्टीरिया भी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ये एल्गी हैं जो कि सिंपल वाटर प्लांट्स को कहते हैं, और ये बैक्टीरिया हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स भी सेल से मिलकर बने हैं और प्लांट सेल में डिस्क शेप ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन केमिकल है जो क्लोरोफिल कहलाता है। प्लांट्स क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर के होते हैं। हर सेल में तकरीबन 50 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जितना हमारा लिटिल फिंगरनेल का साइज़ है। लीफ सरफेस में के इतने एरिया में 10 मिलियन से भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। नाउ आई एम रीडिंग नेक्स्ट पैराग्राफ। For photosynthesis to take place, the chloroplasts need to collect the three vital ingredients: sunlight, air, and water. Sunlight shines on the leaf, and the green chlorophyll inside the chloroplast absorbs it. Air, containing carbon dioxide gas, enters the leaf through tiny holes called stomata. Each hole is called a stoma in the leaf surface. And most plants take up water through their roots and carry it along tubes in the stem to their leaves. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोप्लास्ट को 3 चीज़ों की ज़रूरत है: सनलाइट, एयर, वाटर। सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट्स लीफ में टाइनी होल्स हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं। सिंगल होल को स्टोमा कहते हैं। इन स्टोमेटा के ज़रिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होती है। प्लांट्स रूट के ज़रिए ज़मीन से पानी लेते हैं और लीफ तक पहुंचाते हैं। नाउ आई एम रीडिंग नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन ऑल 3 रॉ मटेरियल्स आर इन प्लेस, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. Energy from the sunlight is used to mix carbon dioxide from the air with hydrogen, which is one of the parts of water. This makes a new chemical called glucose, a kind of sugar. The glucose is transported to all parts of the plant, where some of it is used to produce energy. Some of the glucose is changed into starch and stored for future use, while some is combined with dissolved mineral salts from the soil to manufacture all of the other substances that make up the body of the plant. The mineral salts include nitrates and phosphates, which are needed if the plant is to grow healthily. The nitrates, for example, contain nitrogen, which is essential for making proteins. These help to build the body of the plant. अब क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का केमिकल रिएक्शन होता है और प्लांट अपनी खुराक ग्लूकोज की सूरत में तैयार करता है। ग्लूकोज की कुछ मिकदार प्लांट इस्तेमाल करता है और बाकी ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर हो जाता है। रूट्स सॉइल से वाटर के साथ मिनरल सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं।
कुछ ग्लूकोज इन मिनरल सॉल्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। मिनरल सॉल्ट में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट शामिल हैं जो कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। सो सम ग्लूकोज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, सम ग्लूकोज स्टोर एज स्टार्च and some glucose combined with mineral salts. Now I am reading last paragraph. During photosynthesis, plants make not only glucose food, they also produce oxygen as a waste product. They need some of this oxygen, but the rest comes out of the leaves through the tiny pores or stomata. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बनाते बल्कि ऑक्सीजन गैस भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स, हेयर वेस्ट प्रोडक्ट्स मीन ऑक्सीजन इज रिलीज बाय प्लांट्स आफ्टर फोटोसिंथेसिस। द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। प्लांट रेस्पिरेशन में कुछ ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं और बाकी स्टोमेटा के ज़रिए एयर में रिलीज़ हो जाती है।